Good morning, sir. गुड मॉर्निंग इशिका। इशिका, तुम ही फोन की थी ना? No, इशिका। sir. No, sir. अच्छा अच्छा, ये मिल गया था, क्या बोलते हैं तुम्हारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर्स या चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे क्या लास्ट नहीं टाइम? सर, आप हमको नहीं भेजे। अरे सबको भेजे है, क्लास प्लस लाइट का स्टडी मटेरियल में नहीं देखती है हाँ, तब? लिख लिए सर, लिख लिए हाँ कॉपी में। हाँ, वेरी गुड। तो वही पूछ रहे थे कि सब मिल गया ना, क्योंकि यस फिर सर। नहीं तो ओके। आई थिंक ये तो हो गया था। yes. 6A कहाँ गया? 6A ओ, तुम लोग का तो हम करा ही दिए थे। नहीं, 6A को भी भेज दिए थे। ठीक, तुम लोग को तो हम खुद ही कराए हैं, क्लास में ही कराए हैं ना। हाँ, यस सर। 6A को भेजे थे। 6A का एक सप्ताह से क्लास नहीं लिए। तुम लोग का तो क्लास लिए है, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तीनों दिन क्लास नहीं लिए, हम कोई क्लास नहीं लिए। तो जिसके चलते क्या। अरे गुड मॉर्निंग, आ गया। अच्छा, हाँ भाई सर, भी आ आ, गए। भाई भी आ गया साथ में। हम तो भाई भी। सर आज हम बहुत खुश हैं। क्या बात है, बर्थडे है क्या? ना सर, नहीं, हमको तो लग रहा बर्थडे होगा। बर्थडे तो मेरा 23 नवंबर को है सर। हाँ, बर्थडे तो मेरा 23 नवंबर को है। अच्छा 23 नवंबर को। सर रुकिए। नहीं नहीं नहीं, रुक सकते हैं हम तो नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। ओके। तो आज हम लोग क्या करेंगे? सिलेबस इज ओवर, डिस्कशन इज ओवर। अब डाउट क्लियर्स, ठीक है, चलो वही करते रहे, और नहीं तो फिर चैप्टर 1 ओरल टेस्ट। चैप्टर 1 ओरल टेस्ट। राजवीर मोदी बोल दिया, तो आज चैप्टर 1 ओरल टेस्ट होगा। अब जो है सबका बोलती बंद, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हम बोलेंगे और राजवीर बोलेगा। क्या राजवीर, सही है ना? राजवीर भाग गया, अब कोई नहीं बोलेगा। तो राजवीर के साथ मेरा आज का पहला मुलाकात। तो राजवीर कहाँ गया? राजवीर यहाँ है, अनम्यूट। चलो राजवीर, अनम्यूट हो गया। राजवीर, पंखा चल रहा है जोर से। राजवीर डिस्टर्ब हो रहा है, पंखा तेज चला दिया। ओके राजवीर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंप्यूटर? राजवीर चलो जवाब दो, व्हाट इज। अच्छा, राजवीर फिर से म्यूट हो गया। कहाँ है? हाथ उठा तो दिखे जल्दी से। हाँ, मिल गया। चलो बताओ, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ मशीन। Anyone in the class, if you know the answer, you can raise hand. Anyone in class, if you know the answer, raise hand. The question is, what is a computer? Yes, Devraj. Sir, computer is a machine that is electrical machine that is used to do operations like MS Word, Internet Explorer, etc. Anyone? Anyone else? जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। देवराज का हो गया। Anyone else in the class? अरे सब के सब कंप्यूटर सीख रहे हो और जानते नहीं हो कंप्यूटर क्या है? यस साक्षी,
Computer is an electronic device which is used for many things to do. It is very useful for us. Okay. Anyone else? जल्दी रे, जल्दी से बोलो, हाथ उठाओ। अच्छा, नहीं उठाएगा तो हम पूछेंगे। नितुल, अच्छा, आंचल सिंह, आंचल सिंह। Sir, computer is an electronic device that can perform the various tasks like calculating, watching videos. ओके, ओके। नितुल कहाँ गया रे? नितुल बोलो, नतुल राज। देखा, चुपचाप बैठा हुआ है, भाग भी गया क्या? A computer is an electronic machine that can store and find information, and it can do calculation very fast. Yeah, better than rest of the answers, but that also is not perfect. And you know, Nitul, I'm a perfectionist. Yes, sir. No, that is my drawback actually. ये कमजोरी है. To be a perfectionist is not good. Acha, one more hand raised. Aman Raj. Yes, Aman. Sir, computer is an electronic device for storing the process data typing in binary language, including to instruction giving the various program. Better, बहुत better. Okay, now there is one more hand raised, that is Aryan Raj. Yes, Aryan. The computer is a machine that can arrange information. क्या हो गया? चलो, अब तो मेरा मनपसंद आंसर नहीं मिला, है ना? And due to that reason, if you have pen or paper, better you copy it down. Computer is an electronic machine. Computer is an electronic machine that processes data, accepted from user, that processes data accepted from user using stored instructions, सुधांशु, वीडियो ऑन ना करके लिखो. What I said, computer is an electronic machine that processes data accepted from user using stored instructions and provides information. It can perform calculations. It can perform calculations mat likhna. It can perform mathematical and logical calculations. It can perform mathematical and logical calculations in an enormous speed and accuracy. In an enormous
ANORMOUS, enormous, ANORMOUS, enormous, speed and accuracy. ओके तो अभी पूरा पढ़ते हैं जो हम बोले. थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, डोंट यू नीड नॉट टू चेंज देम एनीमोर. सो जो बताए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट processes data accepted from user using stored instructions and gives information. Full stop. It can perform mathematical and logical operations in an enormous speed and accuracy. ठीक है, तो ये हो गया what is computer. Now, सर हम लोग तो बचपन में वो पढ़े थे, ठीक है वो बचपन था, अभी जवानी है ना, अभी बड़े हो गए हो, अब थोड़ी बच्चा रह गया, अब तो बड़े हो गए हो, अब ऑनलाइन क्लास करने लगा है. बचपन में ऑनलाइन क्लास करता था, पापा मोबाइल देते थे यूज करने के लिए, बेटा ले नेटवर्क डाल दिया है, अब यूट्यूब देखो बैठ के, नहीं ना देते थे, अभी देते हैं. तो अभी बड़े हो गए हो, बड़े हो गए तो सब कुछ तो बड़ा बड़ा होना चाहिए ना, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन भी बड़ा हो गया. यस इलम, आई विल कम टू यू लेटर. ओके नाउ, who all had learnt chapter 1? They only raise the hand. Who all had learnt chapter 1? They only raise the hand. Rajveer had read, Ruma, Ilam had read, learnt. अच्छा बस दो. अरे क्या नाम है, नीलेश, तेजस झा. आज तेजस से सवाल पूछेंगे. हाँ तेजस. यस सर. यस सर, याद किया बेटा चैप्टर 1? थोड़ा थोड़ा सर थोड़ा सा याद है. थोड़ा सा याद है, कब याद करोगे? अब तो पापा को पापा बता भी दिए होंगे कि एग्जाम आ रहा है ना, बता दिया ना पापा. तेजस हाँ. तो अगले क्लास में हम तुमसे सवाल पूछेंगे ना, सब पूरा चैप्टर 1 पूछेंगे तुमसे, सिर्फ तुमसे. रेडी? ओके सर. ओके देन आज तब तेजस को छोड़ देते हैं. ओके राजवीर. यस इलम. इलम बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है, बोल इलम. सर मैं ये बात बोल रहा था सर, लेकिन सर हम लोग आपसे तो बड़े नहीं हो गए ना सर. नहीं, हमसे बड़े कैसे होगा, हमसे बड़ा होगा तो फिर हम तुमसे ना सीखेंगे. And remember that, yes, sir. Ilam, remember that there is no age of learning, and there is no Yes, sir. age of, there must be no age of your teacher too. Yes, sir. टीचर का भी एज देख करके नहीं पढ़ना चाहिए. बहुत लोग सोचता है कि वो तो बच्चा है, क्या पढ़ाएगा. My life, No, sir. in my life, I say you, I had learned computer from a person who is 7 years younger to me. हम जिससे कंप्यूटर सीखे ना, वो मेरे से 7 साल छोटे थे. हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनको टीचर मानते हैं. सिर्फ टीचर नहीं, हम गुरु मानते हैं उनको. There are 2 person whom I treat as my teacher of computer. One is Miss, at that time she was Miss Deblina Mukherjee, and another one is Mr. Indranil Chakravarti. These 2 persons, I treat them as my teacher, and both of them, Deblina was 7 years younger to me, and Indranil Chakravarti was around 10 years younger to me. तो आप समझ सकते हो, there is no age of your teacher. Even you people are teaching me something. Even you people are teaching me something.
So don't think that I cannot learn from that particular person. You know a lot. As I say, I know a lot of computer, but I don't know all. Yes, sir. I don't know all. I'm still learning. So in computers, there is no age. There must not be any age of your teacher. There, you must not treat anyone that oh, usko kuch nahi aata hai. Never, never, Yes, sir. never, never ever treat anyone like that. Okay. So yeah, sorry. Sorry. हम आपका क्लास ट्यूसडे को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. Okay, no problem. I'll send the videos. Just see them. What we are did without you. Okay. Okay then. Yeah. So anyone who had learned the chapter 1 and ready to face my questions. Anyone? जो भी मेरा चैप्टर 1 पढ़ा हो, I already asked you the questions previously. एक बार हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, सवाल जवाब कर चुके हैं, ये दूसरा टाइम होगा. कोई भी अगर मेरा सवाल का जवाब देना चाहता है, चैप्टर 1 बहुत सिंपल है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर देयर. अमन राज बोलेगा? अमन? नॉट रेडी? ओके. हम नेतुल से ही पूछते हैं. नेतुल, let me see. Hermin, I think you had learned. Hermin? No, sir. No, sir. Or yes, sir. No, sir. क्यों बेटा? Why? You are, I think you are sincere student. Your father is sincere. Your sister was sincere. But what about you? Hermin? Okay, sorry. Sorry, अब गप मारने के लिए नहीं. So, okay, I'm not going to ask him. Then let me see. बंदना कुमारी वलोटिया का ये बंदना, can you listen me? Vandana? Yes, sir. Yeah, did you learn? वंदना नहीं पढ़ी है बेटा? थोड़ा बहुत भी नहीं? हाँ, पढ़ी है. जवाब देगी? चलो पूछते हैं तब तुमसे, है ना? So say, how many types of computers are there? Types of computers. There are 3 types of computers: Yeah. Names? microcomputer, Microcomputer. microcomputer, mini computer, Hmm. mainframe computer. Hmm. You missed one more. Supercomputer. Yes. Yes, there are basically 4 types of computers: microcomputer, mini computer, mainframe computer, and supercomputer. Now, Vandana, can you say which computers do we treat as microcomputers? Microcomputers किसे बोलते हैं? Which computers do we treat as microcomputers? Microcomputer. नहीं जानती है? चलो सुन लो, है ना? तो देख, 1-to-1 डिस्कशन कर रहे हैं, तो बाकी सब भी या one Aryan. Yes, Vandana, don't mute yourself. I'll be talking to you back, okay? देखो फिर बंद कर दी. Vandana, I'll be talking to you. Don't mute yourself. I will be talking. Sir, Yes, desktop computer. Sir, हाँ, desktop computer, laptop computer, tablet computer. yes, those computers we can easily carry with us, and those can be placed Sir, on these palms. computer are small in सुन. अच्छा सुन तो ले, हम बोल रहे हैं ना. The computers those we
can carry easily from one place to another, and those can be placed on hand, means palm, lap, or desk. We say those are microcomputers. Microcomputers are used in our daily life. We regularly use them. Those we say microcomputers. Few examples are desktop computers, laptop computers, handheld computers, palm top computers, tablet computers, and then also we have embedded computers. Now what are these embedded computers are? बहुत छोटा सा कंप्यूटर होता है, जैसे कार चलाते हैं हम लोग. Nowadays you had seen the cars, there are lot of automations are there. You have seen that ad of what is that MG MG or MJ motor car का advertisement सुने देखे हो. Hello MG, open the hood. तो hood खुल जाता है ना? So there is a computer inside it. Then we can think of nowadays even the scooters, they are coming with small computers. Scooter में भी छोटा छोटा computer लगा हुआ आ रहा है. We can connect our mobile device to our computer, to the scooters. Scooters, where is my scooter? I can locate it from home. मेरे घर से हम देख सकते हैं मेरा स्कूटर कहाँ जा रहा है. अब जो है बच्चा गाड़ी लेकर के छुप नहीं सकता. पहले क्या बोलता था, बेटा गाड़ी लिया, पापा पढ़ने जा रहे हैं बोल करके चल जाता था घूमने. तो अभी वो नहीं कर सकता. अभी क्या है, पापा घर पे बैठ के देख सकता, अच्छा बेटा तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारा ट्यूशन पढ़ाया जाता है बुधवन तलाव और तुम जा रहे हो मल्लेपुर पढ़ने. पापा घर पे बैठ के देख सकते हैं. there are certain scooters came in. So there are, those are also microcomputers. Okay. Then Vandana, Yes, sir. what do you mean by palm top computers? What do you mean by palm top computers? Computers which we can keep in our palm. Which we can hold in on our palm. Those are called palm top computers. Can you give an example of palm top computers? An example of palm top computer? Smartphone. Yes, that's very correct. Smartphone. Then PDAs, Smartphone, tablet, PDAs, PDA, personal digital assistant. Nowadays, although they are not in much use. Okay, then Vandana, can you say the features of mini computer? Features of mini computer? Yeah. Mini computers, I'm saying you, okay, just listen. Mini computers are larger than microcomputers. Point number one. Point number two, they have large processing capacity. Number three, they supports a number of users at the same time. A number of users can work on the same computer at the same time. Hopefully this is enough, Vandana. ये आसान लैंग्वेज में बता रहे हैं, सुन रहे हो आप लोग, and hopefully you can memorize them. Okay, that's all for with discussion with Vandana today. We'll discuss Vandana later. Okay. Okay, then whom. Let me give some chance to the girls. Girls are so silent. Shreyanshi Singh. Shreyanshi, are you there? Yes, sir. भाई ये तो कौन है? सर हाँ हम कौन? श्रेयांश सिंह. ओके, अच्छा हम श्रेयांशी पढ़ रहे हैं. सॉरी बेटा, श्रेयांश. ओके, Shreyansh, did you learn a bit of chapter 1?
थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो? Yes. Okay then. What is, say, two uses of supercomputer? what? Two use of supercomputer. Supercomputer का use बताओ. The two use of supercomputer. Yeah. नहीं. Yes, राजवीर. श्रेयांश बंद मत करना माइक. हमारा बंद भी कर दिया देखो पहले ही. राजवीर. राजवीर. नहीं. Okay. Anyone else? Yes, राजवीर. बोलो बोलो जल्दी बोलो. हाँ. ये तो सौर्या पे चल गया. सौर्या. Yes, speak out. So these computers are used for forecasting computers. Weather forecasting. Yeah, weather forecasting. Space results. Yes. Yeah. Now these are the two basic uses of supercomputers. Supercomputers are used for weather forecasting and scientific researches. Okay. Then let me ask someone else. Okay. किससे पूछे नीचे जाते हैं. चौरिया से गिल, सुधांशु, तेजस, तानिया सिन्हा. Tania, are you there? Yes, sir. Yeah. Had you learned something from chapter 1? Yes, sir. Okay. Then say, give me few example of supercomputer. 2 examples. Give me 2 examples of supercomputer. Sunbird light, Yes. Rome, Okay. What is the name of the supercomputer built by India? What is the name of the? What is the name of the high speed processing, अरे गधी पहले सुन ले, क्वेश्चन सुनो. What is the name of the supercomputer built in India? Okay, Devraj, say the answer. Sir, Param. Correct it is. It is Param. Okay. Tanya, you had heard the answer? yes, sir. Yeah. Remember, we have how it was built. Now, there is a story behind that. The story is, as India was advancing in space research and nuclear research, so India asked for the supercomputer from Russia. At that time, Russia was united. USSR के नाम से जाना जाता था. So what happened? America has denied. अमेरिका क्या बोला कि रशिया को बोल दिया आप इंडिया को सुपर कंप्यूटर नहीं दोगे. भाई इंडिया चुप रह गया. Then India has founded that CDAC, Society of Computers, and they built the supercomputer, fully Indian made. We had not borrowed the technology from any other country. So you can understand, yeah, obviously, sorry, we Indians are not very poor, at least in case of technologies and brains, we are very good. So you can, that is the name of our supercomputer, Param. Now the second supercomputer is also in existence, I think. And I think it is named as Param 2 or Param 1, like that. So, okay. So let us move on. Tania? Tania? Are you? Okay. नहीं है. तो तब तक हम लोग अटेंडेंस भी ले लेते हैं. टाइम भी खत्म होने वाला है. 10 मिनट बचा है. तो अटेंडेंस लेते लेते ही तो 10 मिनट बीत जाता है. Yes, Tania,
You want to speak? Yeah. Yes, Tanya? Sir, it by mistake muted. Okay, okay. No problem. Be there. I'll be talking to you again, okay? Be Okay, there. sir. Okay. तानिया, पीछे कुछ गाना वाना बज रहा है जोर से, प्रोग्राम चल रहा है क्या? Yes, sir. My sister is watching. Ask your sister to lower the sound a bit, okay? Let me take the attendance. So first one obviously is Tanya now. Few people went out. So Ilham Ali, MD Ilham, then it is Aryan Raj, then we have Tanya Sinha, and we have Aman Raj, के बाद है ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, क्यों हरकत कर रहे हैं तुम लोग? आंचल सिंह के बाद है आस्था कुमारी, then we have Akriti Hemram and Anuranjan Kumar, Arnav Gupta, then we have Vandana Kumari Valotia, Chahat Kumar was also there, Devraj Singh was there, Ashika Raj is there, then Ashika के बाद Hyomin is there. Where is Hyomin? Then Hyomin के बाद है कुमारी साक्षी, अब है नितुल राज के बाद रजनीश राज, Rajveer Modi, then we have सागर सुमन. अच्छा, सागर सुमन के बीच में एक राकेश कुमार आ गया. राकेश कुमार, क्या राकेश? वैकेशन के बाद पहली बार. Then we have राकेश हो गया, सागर हो गया, सौरभ कुमार is there. सक्षम कहाँ गया आज? सॉरी, सक्षम नहीं है. शिवम कुमार, शौर्य शेरगिल, श्रेयांश सिंह, then सुधांशु राज आनंद, सुहानी कुमारी नहीं गए, सुमन सुहानी, स्वरित कुमार भी नहीं दिख रहा. स्वरित कुमार है कि नहीं है? तेजस झा, एंड तो ऊपर में और कोई बचा? वंशिका राज, वरुणी अमया नहीं है. आप देखते हैं वेटिंग हॉल में. ठीक, कोई नहीं है. ओके, वी हैव 5 मिनट्स. तो तानिया के साथ अभी हम 5 मिनट और बात कर सकते हैं, है ना तानिया? Yes, sir. Yeah. So Tanya, can you say what do you mean by language processor? What do you mean by language processor? To translate any high-level language program to a machine language is called language processor, or it is called a language translator. Correct. Now, I want to improve your answer. Your answer is not
up to the standard 6. Okay, तो थोड़ा सा हम इसमें सुधार करते हैं. तो language processor is a software that converts high level language to low level language and vice versa, means the opposite way. Or you can even write a language processor is a software which converts high level language to low level language and low level language to high level language. We say it a language processor. Can you give an example of language processor which converts high level language to low level language? Example of language processor. Assembler, Yeah, translate, interpreter, one more. compiler, Correct. Compiler, interpreter, and assembler. Now, what is the function of assembler? sir, this one I didn't remember. Okay. Assembler is a language processor that converts assembly level language to machine level language. Assembler is a language processor, or you can say software that converts assembly level language to low level language. Now, what is the compiler? Compiler is a translator program used to convert a high level language into a machine language. And थोड़ा सा it translates the whole program at once. correct. This makes the answer complete. This makes the answer complete. Very good. Now, what is the difference between a compiler and a interpreter? Difference between compiler and interpreter. An interpreter translates line by line, whereas compiler translates whole program at once. Very good. Well done. Very well said. Very well said, Tanya. Okay. Now, how many generation of languages are there? How many generation of computer languages are there? There are 4 generation: machine language, assembly language, high level language, 4th generation language. Yeah. Now, what do you understand by 4th generation language? What do you understand by 4th generation language? I don't know, sir. Okay, I'm saying that. Okay, 4th generation languages are very highly user-friendly languages. 4th generation language is highly user-friendly. This type of languages are mostly used for artificial intelligence programming or to retrieve information from the computer. 4th generation language, हम फिर से बता रहे हैं, 4th generation language is highly user-friendly and it is mostly used to retrieve information from the computer system. बस इतना ही काफी है, ठीक है? Okay, sir. Okay. Can you name a computer language that uses compiler? Can you name a computer language that uses compiler? High level language? I asked you the name of a particular language. Acha, can you give the example of high level languages? Example of high level language. I'm asking beyond your book. That's very true. I'm asking beyond your book. हमको पता है, मगर बुक में कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल दिया होगा. हम सिर्फ देखो, सिर्फ बुक पढ़ने से ही सारा कुछ नहीं ना मिल जाता है. कभी कभी उससे बाहर भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है. तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा, जरा सा एक्स्ट्रा. Can you give example of high level language?